Hello everybody. I'm Ranjeeta Ghai, founder RNTalks, and today we are here with yet another very interesting person who has uh, seen the journey from being a mentor to a principal. Yes, it's none other than our Dr. Rupinder Brar. She is the principal of Shivalik Public School, Sector 78, Mohali. Dr. Barar has successfully steered the career pathways of innumerable students. She has participated in as well as led nearly 100 workshops, seminars, and conferences. And not only that, she has also been a teacher's trainer, wherein she has trained teachers to work effectively with the students. Also, she is our RSVK awardee. She's a Karmaveera, and I would love to welcome Dr. Rupinder Brar on our platform today. So, good evening, Dr. Barar, and welcome to our platform today. I'm so happy Good, that good evening, Mrs. Ghai. Thank you for having me here. it's like Rupinder, you have seen so much. You started out as a mentor, right? Then you were a teacher's trainer. Then now you are a principal, Sector 78, Mohali. So, where did you actually start from? When did you actually start? Rather, I rephrase my question. Also, what was the inspiration behind you coming into being a mentor? And how did you gradually upgrade your skills? Yeah, Mrs. Ghai, that's a long journey now. I actually started long back in 2003. So मैंने अपनी पढ़ाई खत्म ही की थी और साथ ही साथ I started working as a teacher in a school. And from there, when I started working, I was preparing for my UGC. So I just thought that I'll clear my UGC and then I'll upgrade myself to a college level. And that is what actually happened. I cleared my UGC and then later on मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया स्कूल को छोड़ के 2 years स्कूल पढ़ाया बट उसके बाद स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लिया एंड देन फॉर मेनी years I was in college only and that was teacher education college mentoring the teachers और उसके बाद then I just thought कि now is the time when I think I should go into the practical aspect of this and टीचर्स को बहुत ट्रेन कर लिया अब जो टीचर्स ट्रेन होकर के स्कूल्स में चले गए हैं नाउ इज द टाइम टू ट्रेन देम और टू वर्क विद देम एंड वर्क विद द यंगर किड्स बिकॉज टीचर्स के साथ काम करना कंपैरेटिवली कॉलेज में इजी है एंड व्हेन यू गो इनटू अ स्कूल प्रैक्टिकली इट्स जस्ट अ 360 डिग्री टर्न क्योंकि आप छोटे बच्चों के साथ काम करते हो एंड देन यू वर्क इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड एंड दैट इज मोर चैलेंजिंग तो फिर मुझे लगा कि yes this is the time to take this challenge head on and that is where I switched on and I have a career of like 20 years now. Oh, Bapre. So, exactly, Kisse, because as I have not been a teacher's trainer, yes, I have attended workshops as a teacher, as a mentor, but I have been a mentor, right? And मेरे Mhm. को पता है बच्चों के साथ क्या हमारे को challenges होते हैं. So, what are the challenges अगर हम थोड़ा ऐसे और ऐसे रखे जाए, अलग अलग हाथ में रखे. So, as a mentor, and when you are mentoring children, challenges अलग होते हैं और when you are mentoring teachers वो challenges अलग होते हैं. So Mhm. क्या आपको लगा and what was your takeaway from there? Because when we face challenges we learn, we take away, Mhm. है ना? Mhm. हम भी उनसे कुछ सीखते हैं, ना ही वो हमसे सीखते हैं. So Mhm. दोनों तरह से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. So what like what have you learned? Like I would just love to know because I know as a mentor but not as a teacher trainer. वहां पे मैं सोच Mhm. बिल्कुल दोनों ही जो जॉब्स हैं वो वर्सेटाइल हैं अपने आप में डायनामिक हैं और व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ स्कूल टीचर आई वाज अ लर्नर माय सेल्फ बिकॉज दैट वाज अ न्यू जॉब फॉर मी and I started as a learner. I started learning, I start grabbing from other teachers what they are doing, what they're doing in their classes, what I have learned in my teacher training college. I tried to implement that in my classes. और 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद when I switched on to college then I was knowing that
प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे थे स्कूल में, एंड दिस इज हाउ वी आई नीड टू ट्रेन दीज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गो इनटू द क्लासेस. उनके साथ काम करना कंपैरेटिवली स्कूल के साथ बच्चों के साथ काम करने से कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर है, बिकॉज दे आर ऑल ग्रोन अप. When a teacher is coming to you in a B.Ed college, they are almost like more than 22 years, 23 years, so they are mature enough to understand your perspective. डिफरेंट पेडागोजीज के बारे में उनसे बात होती है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. और वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हाउ टू टीच इन द क्लासेस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द classes, but we are talking about how to teach that content. And that was a बिल्कुल different tangent पे बातें होती हैं, because I was an economics educator. So how to teach economics in the classes, that was basically done in the classes. What are the different methodologies, what is the psychology of the child, what are the philosophies of education you have to apply in the classes, how to make a model, how to make charts, how to make your teaching interactive, presentations, this and that and all that, these kind of things. But still I would rather say that working with those teachers was easier, because they were all grown up and they were ready to grasp. They were all like, they have come into teaching department just because of their own free will. 80% of the students were there for that only. So it was comparatively good and interesting. I had a lot of learning. I am a creative person. My PhD is in creative drama. So I had that creative club with me. So I had made them work on those creative aspects also. And then when I switched on to this job, now this is not purely a teaching job. It is not at all a teaching job. I would rather say that I am teaching the teachers, only my teachers, that what you have to do in the classes now. They are already trained. They have worked somewhere. They are experienced. They have their own mindsets. They have come with those things into the school. Now, every day it's a new learning. CBSE is changing something new teaching patterns are coming up, child centered learning is there. So every day now I have to see both the aspects. My teachers are also happy, my students are also happy. Teachers are तो happy with the way. अभी तो बहुत ज्यादा हो गए, एक हाथ में बच्चे हैं, एक हाथ में टीचर्स है. फर्स्ट यू हैड either just students or you had either just student Yes, teachers, teachers. right? Yes, But yes. now you have teachers and students also, and so you have to create a very जिसको कहते हैं ना fine balance. As an administrator, माने सुनो सबकी, absorb करो, problem भी solve करो, give solutions also, and make sure that everything is running very smoothly. So Mm-hmm. this is, I think, more challenging. uh, दोनों को इकट्ठे लेके चलना है. पहले तो एक्सक्यूज मी, पहले तो ये था ना सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट टीचर्स है, तो फोकस एक है. नाउ इफ Mm-hmm. यू से दो आंखें हैं, तो एक आंख इधर लगी है, एक कान इधर लगा है, दो आंखें, एक कान, एक कान इधर, एक आंख, एक कान इधर, एंड यू हैव टू काइंड ऑफ लाइक balance the situation. हाँ. So, as a mentor, when you were teaching students, तब Mm-hmm. कोई ऐसा चैलेंज आया था जो आज भी तुम्हारे को याद हो? होता है ना, कुछ मेमोरीज हम बना लेते हैं, लाइफ Mm-hmm. टाइम मेमोरीज, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हमेशा याद रह जाती है. एंड व्हेन वी जस्ट थिंक ऑफ इट, इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेस. या फिर कोई ऐसा Mm-hmm. बैच निकल जाता है हमारे हाथ से, व्हेन वी आर टीचिंग अ बैच, एंड दैट पर्टिकुलर बैच इज वेरी स्पेशल. Mm-hmm. तो ऐसा कुछ हुआ था एज व्हेन यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स? Mm-hmm. कैमरा रोटेट हो गया, आई थिंक. Just a second. Yeah. Yeah, that's fine. So Uh, you are teaching the students as well as a different experience when you are teaching student teachers. तो दोनों experience mm-hmm. share करिए. Mm-hmm. Yeah, actually, when I joined as a teacher, I was very, very young. I was just 23, and as a teacher, and I got to teach +1 and +2 classes. Or many maximum of the boys in economics class were there. Girls were very less in number. So, kind of that age when boys are into 17 and 18 years of age, and they all of them were like, we बहुत young teacher has joined our class, and students के वो चेहरों पर स्माइल आ जाती है ना कि young teacher has come to our class. अब तो हम सुनेंगे नहीं, है ना, अब अपनी मस्ती देखेंगे. करेंगे. हाँ, अब अपनी मस्ती करेंगे, टीचर की सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है. So I just followed two criteria at that time. I मैंने स्माइल करना बंद कर दिया.
बहुत स्ट्रिक्ट अपना चेहरा बना लिया, और कंटेंट के ऊपर मैंने अपने घर की दीवारों पर पूरा लेसन प्रिपेयर करना, और अगले दिन मैंने वो कंटेंट जो है मतलब बिना 1 इंच भी इधर उधर किए मैंने उसको डिलीवर करना, सो दैट आई हैड फुल कंटेंट नॉलेज एंड कंटेंट क्लैरिटी विद मी। और वो मैंने पढ़ा कर फिर अगले दिन उसको दोबारा से पढ़ाना। तो थोड़े ही दिनों में वो समझ गए कि नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हल्के में नहीं लेना हमने इस टीचर को। एंड व्हेन आई लेफ्ट दैट स्कूल, और कुछ सालों के बाद उन लोगों का गेट टुगेदर हुआ, दे वर ऑल +1 +2 स्टूडेंट्स एंड दे ऑल were like grown up and tall कुछ साल के बाद, and one of two of them called me कि मैम हमें मिलने आना। I also left that school by that time, and when I went, all those tall grown 6 feet children, they all came and touched my feet like anything। अभी मैं सड़क पे खड़ी हूँ, अपनी गाड़ी में से उतर के उनको मिलने गई हूँ स्पेशली कि बच्चों ने बुलाया है, एंड ऑल ऑफ देम, वो मुझसे भी लंबे लंबे हो गए थे, दे वर ऑल हाँ टॉल एंड दे वर ऑल टचिंग माय फीट सड़क पे, एंड पीपल वर लाइक लुकिंग कि शायद कोई नेता वेता आया है जिसका इतने लड़के पैर छू रहे हैं। सो दैट वाज अ मोमेंट जो दैट टच माय हार्ट, एंड जस्ट आई फेल्ट कि भी बच्चे बच्चे ही हैं वो आपके, इवन इफ देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, बट एज अ टीचर आई फेल्ट दैट दे आर ऑल माय किड्स। सो दैट वाज अ वेरी टची मोमेंट इन माय लाइफ व्हेन दैट हैपेंड। एंड उसके बाद जब when I was into a teacher training college, then obviously you have to be friendly with the kids because they were all grown up, they were all girls who were 22, 23, 25, maybe little more than that. And there I got a student who was my elder sister's friend, and she had like done her masters and all, and then into family life, and then she had again come back after many years to be the student there, and I was a teacher there, but she was my sister's friend. So she saw me and said, Rupinder, tu ette? And then I told her, now I am your teacher, you can't say me like that, है ना? You have to like, है ना? I am Rupinder ma'am here, not like Rupinder. So, but with her, the journey was very good. She gradually changed to Rupinder ma'am. And then obviously you cannot be that friendly with them, na, ki they'll call you Rupinder only. So that was also an interesting experience. And now is a new journey as a principal. That's another level of new journey. You tend to know more people. Now you told me that I have two things in my hand. One is the children and one is the teachers. But I would rather say that now I have to have a third hand in which I am carrying the expectations of the parents also. आई वॉज अबाउट टू से इट। मैंने कहा तुम अभी रुकोगी तो मैं बोलूंगी कि तीसरा तुम्हें भूल ही गई, पेरेंट्स उनको भी तो समझना आता है। बच्चे तो फिर भी समझ जाते हैं, Yes. बच्चे फिर भी समझ जाते हैं, बिकॉज जब हम बच्चों को कुछ बताते हैं ना वो सुनते हैं। But parents have got such high expectations, and sometimes some are very, you have to really work on them. Yes. Some parents are very good. You feel ऐसा लगता है कि भाई सभी इनके जैसे क्यों नहीं होते, while some are they're little like difficult to deal with. So if tactfully dealt with, then they are with you, but you have to deal with tact. You can't just be very brash with them or just expect कि वो खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। Yes. उनको थोड़ा tactfully, patiently समझाना पड़ता है, एंड उसी टाइम पे बच्चे को भी बचाना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो सारा गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन जाकर ना पेरेंट बच्चे के ऊपर डंप करते हैं घर। Yes. So you have to ensure कि वो चाइल्ड बैशिंग जाके ना हो घर पे। So हर चीज को tactfully देनी पड़ती है, so that ultimately the child is not victimized. तो Very true. ये तो हो गई तुम्हारी प्रोफेशन के बारे में। Other than this, I would like to tell my viewers that Rupinder Brar, Dr. Rupinder Brar, is also a writer, and she's an author, and she's a poet. पोएट्री पे हम लास्ट में आएंगे, जैसे कुछ पकवान खाते हैं ना मीठा, एक बढ़िया सी पोएट्री सुन के फिर हम इसको एंड करेंगे। बट बिफोर दैट, would you please tell us about your new book that has been launched? It has been launched, na? Yes, yes, yes. Yes, it has been launched. Yes, my new book is basically, I'll show you. This is the book. Parvi Asma Asim hai. So this is the cover page of my book. So this book is about women empowerment. Basically, it's a poetry book, and
all the poems are regarding the different context of a woman's life. है ना? There are different phases, different colors, different shades of a woman's life, and all the poems in this depicts the woman in different shades of her life. Sometimes she's a daughter, sometimes she's a mother, sometimes she's a wife, sometimes she's a friend. So she has those different. Sometimes she's an employee, sometimes she's a leader. So different aspects of her life, different phases of her life. And the poem is this book is I have written it in a very beautiful way. On in every page, I have written the context of the poem in English and the poetry is in Hindi. हर पोएम के आगे उसका एक कॉन्टेक्स्ट है जो हिंदी में दिया है कि वो पोएम किसके बारे में होने वाली है और फिर हिंदी में उसकी पोएम आ जाती है. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल रिटन बुक and I've launched it in literature festival, Chittish Literature Festival in Delhi. And बहुत दिल से मैंने लिखी है किताब. It is about the woman in your life, so everyone can cherish that. And ये जो बुक है पारवी, that is Parvi is my daughter's name, और उसके नाम के ऊपर ये बुक मैंने बनाई है because she is into that age where she has a lot of things to see and explore now. She's going to be adult in another like 1 year. And then इसीलिए उसको मैंने dedicate की है that there's a world, there's unlimited things for you to see in this world. So go and explore this world. That's beautiful. Like, just talking about women empowerment and then writing something on it, wo bhi poetry ke through is not very easy because I myself write poetry, but my poetry is mostly limited in English. Mera Hindi Mhm. thoda weak hai. And when I write in Hindi, it's a very common man's, layman's Hindi. माने जो Mhm. कहते हैं ना लोग मोती पिरो पिरो के लिखते हैं हिंदी में, Mhm. मुझे ऐसा नहीं आता. मेरा बहुत ही साधारण हिंदी है. बट Mhm. इंग्लिश आई कैन वर्क मोर. Mhm. That is my handicap. But definitely I do like to write in Hindi and like refer. माने I try to connect with my mother tongue. But Mhm. जैसे आपने ये पोइट्री लिखी है and Parvi is your daughter. You Mhm. have a son also. Yeah, yes, I have a son also. What's his name? His name is Aryaman. तो आर्यमन ने ये नहीं बोला कि मम्मी सभी कुछ पारवी के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं? नहीं. मेरे घर में होता है. No, no, he is very close to my heart, and there is a story behind his being very close to my heart because when he was born with a very, very rare ailment. So there were a lot of challenges in bringing him up to such a nice and smart boy. So he knows it very well that he is very close to my heart already. So no questions after that. Lucky. Because my son, जैसे होता है ना, like when my daughter had gone into college, since वो बड़ी है and we were posted in Dingjang, so Mhm. उसने 12th तो कर ली केवी से. वहां पे Mhm. केवी था and APS था. एंड क्या हुआ था 10th में when she graduated, मैंने 10th जब खत्म करी थी, we were in गोलकोंडा, हैदराबाद. Mhm. So Hyderabad, Golconda, they did not have arts. They had commerce bhi nahi tha. They had only sciences. Mhm. Now she didn't want to take up maths, no chemistry, no physics, nothing. उसको साइंस को लेना देना ही नहीं करना था. So I had Mhm. asked her, बेटा क्या करना है? कहता कुछ भी दे दो, बस इन 3-4 चीजों से ना मुझे दूर कर दो. मुझे पढ़ना ही, शक्ल ही नहीं देखनी है. ऐसे ठीक है. So फिर आर्ट्स था नहीं. So I had to shift her from APS to केंद्रीय विद्यालय. Mhm. तो जब केवी में शिफ्ट हुई 11th में, बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हस्बैंड आर्मी में थे, सो आराम से हो गया. दिक्कत नहीं हुई Mhm. हमारे को 11th में शिफ्ट करने में. देन वी Mhm. वेंट टू पिंजांग. तो ऑब्वियसली केवी टू केवी ट्रांसफर आसान से होता है. वहां पे तो दे हैड फील्ड्स, बट सिंस शी वाज इन केवी, सो आई थॉट केवी टू केवी आराम से ट्रांसफर होता है. आप केवी में वहां Mhm. से निकली. सो देन इट वाज लाइक नाउ व्हाट, कहाँ पढ़ोगी? यहाँ तो कोई स्कूल नहीं है, और यहाँ किसी Mhm. कॉलेज में भी डाल दिया. दिंजांग इज अपर असम. इट्स टी गार्डन्स. Mhm. गार्डन में 2 अच्छे स्कूल ही मिल गए, बहुत बड़ी बात है. Mhm. कांट एक्सपेक्ट. चारों मैंने जहां तक नजर जाती है, जहां तक एक चिन्नी सी चिड़िया दिखाई देती है, इट इज जस्ट चाय बागान. बारिश आती है तो सिर्फ चाय पीने की जरूरत नहीं, बाहर निकल कर ना ऐसे कर लो, बस चाय पी लिया आपने, खुशबू से ही चाय पी लोगे. Oh, सो very nice. इतना You must चाय. have enjoyed staying there, no? Oh, thoroughly. We had
leopards, we had panthers, we had हम्म whole wildlife out there and roaming free, खुले घूमते थे. हम्म So वो जगह बहुत ही close थी. And then daughter went to Delhi, but हम्म obviously तो वो first time my daughter went away and I was staying without her. So वो बच्चा जब चला जाता है ना पास से तो बहुत एक अजीब सा लगता है, बिकॉज शी इज द लाइफ ऑफ माई लाइफ. घर में पूरा पक 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 पूरा घर रोशन करके रखती है वो. सो आई वाज प्रीटी डाउन एट दैट टाइम. 6 महीने मेरे को लग गए उससे अलग होके, काइंड ऑफ लाइक जीना सीखने के लिए. सो होता है ना, व्हेन यू आर पोएट्स तो यू स्टार्ट पेनिंग डाउन एवरीथिंग, आप लिखना शुरू करते हो. I was writing poetry, and in though that poetry, I had like talked about her going away and how lonely the house was. And my son was like, हाँ हाँ, तुम्हारे तो मम्मा सारी पोयम ही दीदी के लिए होती है, मैं तो कहीं आता ही नहीं हूँ. यू डोंट लव मी एनी मोर. आपका तो सर्व मैंने सभी कुछ दीदी है, दीदी था. मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. कहता हम मेरे पे तो कभी कुछ लिखी ही नहीं, आज तक नहीं लिखी. मैंने कहा बेटा जब तू जाएगा ना, तब तेरा लिखूंगी. नंबर भी आएगा. इसे यू मीन टू से मम्मी मेरे को 2 और साल वेट करना पड़ेगा कि आप मेरे लिए कुछ लिखोगे? मैंने कहा हाँ, इतना तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा बेटा, कि जब तुम भी कॉलेज में चले जाओगे, घर में कोई भी बच्चा नहीं होगा, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में भी लिखूंगी. तो ही वाज लाइक ठीक है, जब मेरे बारे में लिखो, सिर्फ मेरे बारे में लिखना, दीदी को मत घुसेड़ना. नहीं, इससे मैंने पूछा कि तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ था कि पारवी के नाम से बुक है? नहीं सर यार, मेरे को तो मम्मा मेंशन ही नहीं किया आपने. अभी तक तो नहीं हुआ, टचवुड. So इसका, so you are also a poet, right? And Parvi is your poetry book. एक या दो पोएम सुनाओगे? Would love to hear your poetry. Yes, sure. Of your choice. But Whichever poem is very Mhm. close to your heart. It can be one, it can be two. There is no. Mhm. We have got about 9 minutes. We'd love to hear your Mhm. poetry. There is one poem which I have written, Aam Insan. Basically, I always have talked about inclusiveness in every place. So उसके ऊपर ही मैंने ये लिखी थी पोम. मैं एक आम इंसान हूँ, 2 पैर, 2 हाथ, सब कुछ बस आम सा ही तो है. शक्ल सूरत तो आम है ही, नजरिया भी मेरा कुछ खास नहीं. किसी विकलांग को देखकर मैंने अफसोस तो जताया या कोई किस्सा सुनाया, पर क्या उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया? नहीं. क्यों? क्योंकि मैं तो एक आम इंसान हूँ. और क्या मैं भगवान हूँ? अपने खास बच्चे को उठाए एक माँ डर डर के कदम बढ़ाती है. अपने खास बच्चे को उठाए एक माँ डर डर के कदम रखती है. हम जैसे आम इंसानों की बातें उसे सताती हैं. क्यों, कैसे, कहाँ, बातें ये उसको रुलाती हैं. जिसे भगवान ने खुद खास बनाया है. हम कहते हैं ना, जो बच्चे कोई डिसेबिलिटी का शिकार है, हम कहते हैं वो खास बच्चे हैं. जिसे भगवान ने खुद खास बनाया है, उसे हम क्या दे पाएंगे? आम से खास बनने का सफर शायद वह भी ना तय कर पाएंगे, शायद वह भी ना तय कर पाएंगे. सो दिस इज वन पोएम आई हैव रिटन फॉर दोज चिल्ड्रन जिनको हम कहते हैं कि उनको इंक्लूसिवनेस में आना चाहिए, बट हम कोशिश जो है वो पूरी तरह से नहीं कर पाते. Yes, and एक और चीज मेरे को, like when we were talking about it last month, because I think last month or last to last month, inclusiveness का month था, and special children के बारे में and people with disabilities उन्हीं का month था. हम्म तो यहाँ पे मेरे को एक चीज का फील हुआ that when कई लोग, खैर मेरे तो नहीं है, बट बहुत शुरू शुरू में मुझे होता था that we suddenly find ourselves staring at them, which is very rude. हम्म I मेरे साथ भी होता, सी मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, ठीक है, आई एम हम्म एंड सडनली व्हेन यू सी समबडी विद अ पर्टिकुलर डिसेबिलिटी, हम्म कहते हैं ना 100 के बीच में आपको एक दिखेगा तो ध्यान वहीं जाता है. हम्म That is something different. And then unknowingly we become so rude that we keep on staring at that, and that becomes rude actually. मन में हमारा कुछ बुरा नहीं है, it just that our staring is so very very rude that a person might get offended because वो already बहुत सारी चीजों से लड़ रहा है. हम्म
They We have a don't lot of challenges otherwise also. lots of challenges, Mhm. fighting with stereotypes, fighting with the society, trying to Mhm. change people, and most of all, being accepted as what they are, a normal person, you know. Mhm. लोग क्या Mhm. करते हैं, वो डिसेबिलिटी पे फोकस करते हैं, ये देखना भूल जाते हैं कि उस डिसेबिलिटी के पीछे एक होनहार इंसान Mhm. है, जो Mhm. हमारे से भी ज्यादा शायद उसके पास गुण होंगे या टैलेंट्स होंगे. दैट इज व्हाट Mhm. एंड ये होता है. सो you talk and you like promote inclusiveness. So Mhm. what do you propose to people जो कभी इस तरीके से are thrown into a situation, or who Mhm. meet a person with disability and suddenly we find ourselves staring. एक तो मैं जानती हूँ कि like we should stop staring, but other than Mhm. that, what do you think should we do to at least make them feel comfortable around us and avoid being rude to them? आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि सबसे पहली जो चीज हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि वी शुड नॉट एटलीस्ट सी देम इन दैट लाइट. हमें जजमेंटल नहीं होना है कि अरे मतलब उनको देखते रहना है. या सबसे पहला काम ही हम ये कर सकते हैं, वी हैव टू बिहेव वेरी नॉर्मली. बिहेव क्या मतलब, इट हैज टू कम वेरी नेचुरली टू अस. हमें अपने आप को ट्रेन ही ऐसे करना है कि इट हैज टू कम वेरी नेचुरली, बिकॉज whosoever has been made in that certain way. और या कोई भी कोई प्रॉब्लम है किसी के साथ, कोई खुद नहीं चाहता कि मेरे साथ वो इशू हो. सबसे पहले हमें अपने आप को ये समझाना है. दूसरा, हम उनको अपनी लाइफ में किस तरह से शामिल कर सकते हैं. मे बी एज अ फ्रेंड, मे बी एज अ लाइफ पार्टनर, मे बी जस्ट उनसे मिलके, उनसे इंटरेक्ट करके. हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन हेल्प देम. उनको हमें सिंपैथेटिक नहीं होना है, एम्पैथेटिक नेचर से उनके साथ रहना है. वी शुड नॉट बी सिंपैथेटिक टू देम. हमें उनको, वी हैव टू गिव देम मोर पावर, नॉट दैट हमें सिंपैथी उनको देनी है. सो हमारे को अपना एटीट्यूड ही सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द थिंग्स वी कैन डू. एंड वी हैव टू कीप टॉकिंग टू आवरसेल्फ अगेन एंड अगेन दैट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, आई हैव टू बिहेव लाइक दैट. उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है, आई एम नॉट बिहेविंग नाइसली. मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है. दिस इज व्हाट वी Right. नीड टू टेल आवरसेल्व्स. एंड फॉर द व्यूअर्स जो ये सोचे कि भाई सिंपैथी और एम्पैथी क्या है, हाउ टू शो इट, आई थिंक द बेस्ट वे इज, हिंदी में अगर हम बोले, उनके ऊपर तरस खाना बंद करो. हम्म. तरस मत खाओ, but wait patiently and allow them to do whatever they want to do at their speed. हम्म. वो थोड़े आराम से करेंगे, but because obviously they aren't as able as us, but allow हम्म. them to complete the task. And हम्म. if you think that they have got stuck, then you हम्म. can just politely ask them that if they need any help. If they need हम्म. it, they'll definitely ask you for a particular kind of help. If they can't, हम्म. if they don't, they'll just tell you, no, wait, I'll do it myself. So don't go हम्म. all out doing कि अरे तुम छोड़ दो, मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए, तुम तो ये मत करो, तुम तो वो मत, तरस मत खाओ, करने दो उसको. हम्म. करने दो हम्म. अपनी स्पीड से, अपने टाइम से उसको करने दो. इफ यू आर इन पब्लिक, हम्म. देन वेट फॉर देम. अगर वो सीढ़ियों से हम्म. नीचे आ रहा है, अगर आप 2 मिनट वेट कर लोगे तो कोई ट्रेन नहीं छूट जाएगी. Just wait for them बिल्कुल. to come down the stairs at their speed. Give them a हम्म. smile, an encouraging smile, as if to say, yes, you've done it types. Give a sweet हम्म. smile and आप चढ़ जाइए सीढ़ियाँ. No problem. हम्म. If they get stuck at a point, then you can definitely ask them, like, can I help you? हम्म. Rather than just doing, आओ जी पकड़ के नीचे लाओ जी. नहीं, मत करो. You are हम्म. actually hurting their dignity, self-respect. Don't do हम्म. that. Ask them, हम्म. and then if they need it, they'll ask it. Otherwise, they'll just tell you, no, give me 2 more minutes. And हो जाता है काम. So this हम्म. is the difference for our viewers. I was just explaining कि sympathy और empathy आप कैसे practice कर सकते हैं. हम्म. हमने भी सीखा है. हम्म. I tell myself, even today, if I see somebody and I just find myself looking for more than a few seconds, I just tell myself, stupid, don't stare. Give a smile. हम्म. Give a हम्म. nice smile of acknowledgement. Yes, I can see you. You exist. हम्म. That smile हम्म. is very encouraging. So, हम्म. Rupinder, we before just finishing, एक poetry और हो सकती है तुमसे, and then we'll हाँ, call it a day. बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज अ पोम कॉल्ड नेम्ड गहराई. इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ना चाहूंगी. A strong woman is one who feels deeply and loves fiercely. Her tears flow just as abundantly as her laughter.
A strong woman is both soft and powerful. She is both practical and spiritual. A strong woman in her essence is a gift to the world. और इसी के साथ पोम है गहराई. तुम आसमां तो मैं जमी हूं तुम्हारी, तुम कारवां तो मैं मंजिल तुम्हारी, तुम अगर शाम हो तो मैं सुबह तुम्हारी, तुम दिया तो मैं बाती तुम्हारी. ये जो लाइनें हैं ये आमतौर पर हमें शायरी में मिलती हैं. तो मैंने इसके आगे लिखा है, किसी शायर की ये पंक्तियां पढ़कर लगा कि प्यार में कितनी गहराई है. शब्दों का माया जाल तो बहुत अच्छे से बुना है, पर हर शब्द में एक दूरी समाई है. कितना अच्छा होता अगर तुम आसमां तो मैं आसमां में उड़ती हुई एक पक्षी होती. जमीन से तो आसमां बहुत दूर है. तुम कारवां तो मैं उसी कारवां में तुम्हारा हाथ पकड़कर मंजिल की तलाश करती. खुद मंजिल बन तुम्हारे आने का इंतजार ना होता. तुम गर शाम तो मैं शाम का सुरमई रंग बनती. सुबह होने का कोई विचार ना होता. तुम दिया तो मैं कुम्हार की मिट्टी होती. तुम्हारे स्वरूप को बनाती और सदा के लिए तुम ही में समा जाती. सदा के लिए तुम ही में समा जाती. This is awesome. थैंक This यू. is actually awesome. माने ये है हटके सोच, और थैंक पहली यू. वाली थी आम सोच. This is like, thinking out of the box, creativity which is out of the box. And गहराई जो लिखा ना, वाकई में बहुत गहराई है. अगर कोई सोचे तो this can actually mend lot of relationships also. बहुत सारे relationships को ये लाइन पे ला सकता है. And it can guide way to people like, who have kind of lost their way around love or faith on each other. Midlife crisis आती है ना, हाँ आई थिंक हाँ. मिड लाइफ क्राइसिस में ये पोम अगर पढ़ लेना कोई, तो उसका वापस से सॉर्ट आउट हो जाएगा. They'll again fall in love with each other and maybe understand why they fell in love with each other 20 years back Yes, actually. and rediscover it Mm-hmm. in a new angle. People go through this. So I think इसको तो मिड लाइफ क्राइसिस के लिए ना apt poem बनानी चाहिए, so that husband looks at the wife in a new way and wife looks at the husband in a all new way. And शायद वो पीछे 20-25 साल पीछे जाके they can, like, rekindle the romance which was then, and then, like, make their old age and second innings even more better. Yes, very true. So thank you, Rupinder. This was indeed a very, very unique evening, full of poetry and your challenges and experiences as a mentor, as a teacher trainer, as a principal administrator, a caregiver, a nurturer, as a mother, as well as an author and a poetess. So बहुत सारा हमने डॉक्टर रुपिंदर बरार के साथ जोड़ दिया आज. And it was indeed a very, I would say, nice evening spent, quality evening spent today with you. So Thank you so much, and thank you for being such a wonderful host. Because see, the way you ask question, it comes so naturally that it was just not an interview; it was just a conversation, beautiful conversation which happened, and everything was such spontaneous and promptly. All the things were flowing. So the credit goes to the host also. Full yeah, credit. if I have a very inspiring person in front of me, I get inspired too. So it's vice versa. Thank you so much, Rupinder, Dr. Rupinder, for being here. आज मैं डॉक्टर लगा के ही बोलूंगी, without doctor I'll be off screen with you, but here you're Dr. Rupinder Brar. So with due respects, thank you so much for being here with us and giving life to this platform once again for this evening. Thank you And so much. heartiest congratulations for being a Karmaveera. And Thank you. we look forward to having you here again sometime in future. Thank you so much, RNTalks, for honoring me with the award. And yes, we'll look forward for more wonderful sessions ahead. And thank you once again for everything. A pleasure to meet you here. Chale. Thank Tata. you. Bye. So that was Rupinder Brar, a multi-talented lady, and it's indeed an inspiration. She is indeed an inspiration, and हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम सोसाइटी को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. If you are such person, do get
in touch with us. We would love to have your story. We would love to know you. We would love to bring out your talent so that you can go out and be an inspiration to someone. ये मत सोचिए कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में, इंस्पिरेशन होने के लिए मुझे एक पब्लिक फिगर होना पड़ेगा, राइट? नहीं, इंस्पिरेशन होने के लिए आपको पब्लिक फिगर होने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी यू. You just have to be you yourself, original you. Right? So if you have that, do call us or email us or let us know here in the comment section. And definitely we'll get back to you and we would love to air your story on our platform. Thank you so much for being here. Tomorrow we'll be here with another Karmaveera. And till then, see you. Tata. Bye bye.